So this is the second part of organizational behavior, and we'll be covering two subtopics. First is role and second is group dynamics. So let's begin. So first you should know what is a role, role expectations, role identity, role perception. Basically, role is a position which an individual holds in an organization. Role expectations, what is expected of an individual in an organization. Role identity, there are several behavioral patterns uh, which give rise to a role identity. So then next is a role perception. It means how the concerned person is supposed to behave in a particular situation. So yeah, these are the terms you should know in detail. And then comes the role in the context of organizational behavior. So basically there are many functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. But apart from these functions, Mintzberg basically categorized organizational role into three categories. Now these three categories are: first is interpersonal role, then informational role, and then decision role. So there are sub categories. For example, first one is interpersonal role. So इस रोल में ही जो तीन तरीके के और रोल्स निभाए जाते हैं वो रहता है लीड रोल, लीडरशिप रोल, लाइजन रोल. लीड रोल मतलब managers should lead to be a successful manager. They should take initiative. They should be proactive in all organizational activities. क्योंकि the team members will only be active if they have a leader who is active. Then comes a leadership role. लीडरशिप रोल वही लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. He should be able to motivate his subordinates, and he should be able to influence his peers and his subordinates, and he should own the responsibility of a task वगैरह वगैरह. Then liaison role, it means that good liasoning with outside agencies is very important organization के लिए to survive, because no organization is self-sufficient, and every organization, every person is interdependent. So it is the responsibility of managers to maintain a good network outside organization. So ये तीन हो गए. Then comes informational role. इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर है he should be vigilant, he should be aware क्या चल रहा है आसपास, करंट क्या सिनेरियो है इकोनॉमी में, एंड दैट इंफॉर्मेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन. देन ये जो इंफॉर्मेशनल रोल है इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो रहते हैं. जैसे पहला है मॉनिटर रोल. मॉनिटर रोल मीन्स दैट द मैनेजर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड स्कैन देयर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट. एंड ये कैसे होता है? बाय बीइंग अवेयर. सो बेसिकली one has to monitor the internal as well as external environment and make use of that information for the benefit of the organization. Then comes the information disseminator role. What is information disseminator role? It means that whatever information they have gathered from internal and external agencies, so it is the responsibility of manager to inform his subordinates about the changes in their policies or other matters, to their subordinates, their peers and other members of the organization. And this can be achieved through mails, phone calls, meetings, etc. Then third is spokesman role. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशनल रोल में आया कि पहले मॉनिटर किया, फिर वो इंफॉर्मेशन अपने आसपास दी. देन स्पोक्समैन रोल मतलब कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही पास नहीं करनी है, बट उन्हें एज अ स्पोक्समैन भी एक्ट करना है फॉर हिज यूनिट. ही शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट हिज यूनिट by sending relevant information to people outside his unit, and or even making some demands on behalf of his team or unit. So basically ये रहता है.
देन जो थर्ड रोल है डिसीजन रोल्स, इसमें भी 4 सब कैटेगरीज है. सो बेसिकली डिसीजन रोल क्या है? टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. तो फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर रोल. So as an entrepreneur, managers are constantly involved in improving their units and facing the ever changing technological environment. So they constantly look for new ideas and concepts to improve their product and motivate their subordinates to be more creative and innovative. So basically as an entrepreneur, नए नए ideas की इम्प्लीमेंटेशन करना है, नई नई चीज़ें लानी है. देन कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग रोल, एज वी ऑल नो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए. देन रिसोर्स एलोकेशन रोल, जितने आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेहतरी से इस्तेमाल कर पाएँ, टू मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, टू to attain maximum profit, maximum output from the limited resources that we have. Then negotiator role, it means that one needs to be present, one needs to be uh, a good negotiator. One needs to present himself with concrete data, its relevance, worth and importance. Every manager needs to play the role of negotiator and represent his organization while negotiating deals and agreements with and outside the organization. For example, negotiating with the unions and the suppliers and the customers. So a manager should be a good negotiator. So yeah, these are the 3 types of roles which a person has to uh, has to play in an organization as per Mintzberg. Next is role system. So there are 2 system of roles in organizational setting. एक कहते हैं role space और दूसरा होता है role set. Now what is a role space? Role space मतलब different kind of roles which an individual occupies and performs, उसे कहते हैं role space. Role set वो चीज़ है जिसे हम कहेंगे एक सिस्टम हो गया रोल का, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं, जिसमें से एक इंडिविजुअल का रोल भी होता है. इन सिंपल टर्म्स, role space refers to the kind of different roles which an individual performs. A role set refers to the complete system of different roles of which an individual's role forms a part. तो जो इंडिविजुअल रोल परफॉर्म करता है वो भी एक बड़े सिस्टम का पार्ट है, उस बड़े सिस्टम को हम कहते हैं रोल सेट. सो या ये 2 चीज़ थी. इसके बाद आता है हमारा रोल स्ट्रेस. रोल स्ट्रेस क्या होता है? वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, सो no need to define. So yeah, there are 3 types of role stress. First is expectations generated stress, then resource generated, and then third is due to conflict between role and personality. Sometimes हमारे टेम्परामेंट को जो है जॉब सूट नहीं करती, या जॉब जो है हमारे टेम्परामेंट को सूट नहीं करती, कुछ भी कह सकते हो. So yeah, these are the 3 types of stress: expectations related, resource related, and then due to conflict between role and personality. ये हो गया. And then next topic is group dynamics. So basically group dynamics is a social process by which people interact and behave in a group environment to achieve a common goal. And groups have influence on an organization, and they are inseparable from the organization. Therefore study of group behavior is important. So there are many kinds of group in an organization: formal, informal,
वगैरह वगैरह. So we need to study their pattern and how they interact, uh, so that we can understand their working and their impact on the organization. So next is the types of groups and their pros and cons. Please read these topics in detail. So there are three types of groups basically. First is functional or formal groups. For example, HR department in an organization, accounts department, etc. Then comes the task groups. They are temporary in nature. They are created to accomplish a certain objective, and once it is completed, so the task groups are dissolved. Then there are informal groups, based on same interest, same profession, वगैरह वगैरह. uh, Next is theories of group formation. So first one is propinquity theory. तो एज पर दिस थ्योरी, जितना ज़्यादा लोग जोग्राफिकल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे उतना ज़्यादा वो अपने आप को एफिलिएट कर पाएंगे एंड मोर चांसेस ऑफ बीइंग इन ग्रुप्स. देन होमस थ्योरी, ऑल्सो नोन एज इंटरेक्शन थ्योरी, ये कहती है कि more the involvement through activities, more the interactions, more the emotions, and therefore more the probability to be in groups. जितना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन होगा. Then comes the balance theory, given by Theodore Newcomb. So ये थ्योरी कहती है कि जितना ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी इन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स, उतना ज़्यादा ही ग्रुप्स फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं. बेसिकली बैलेंस थ्योरी is a combination या additive of the propinquity theory and Homer's theory. और एक balance है between these two theories. Then comes the exchange theory proposed by Thibot and Kelly, and according to this theory, the outcome of a relationship must be rewarding in order to have an attraction or affiliation among the members of a group. तो एक्सचेंज थ्योरी मतलब कुछ अगर आउटकम हमें मिलेगा तो ही हम इस ग्रुप में रहेंगे, सॉर्ट ऑफ थिंग. सो या दीज आर दी 4 थ्योरीज. देन कम्स दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि ग्रुप कैसे डेवलप होता है. सो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले गेटिंग फेमिलियर, थोड़ा सा जाने पहचाने एक दूसरे को. देन सेकेंड इज़ शेयरिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, अपने आइडिया शेयर किए ड्यूरिंग दिस स्टेज. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग वंस रोल एंड अदर्स रोल इन द थर्ड स्टेज. हर इंसान अपने रोल पहचानता है, एक्सेप्ट करता है, और दूसरों के रोल्स भी पहचानता है, एक्सेप्ट करता है, एंड दे बिकम मोर कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड डेवलप अ सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड यूनिटी. देन स्ट्राइविंग टू अचीव द सेट गोल्स. एंड जो फोर्थ स्टेज होती है, दैट स्टेज इज़ टू अचीव द सेट गोल्स बाय द कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेथड in which the members perform the roles they have accepted and direct their group efforts toward goal attainment. So ये steps रहते हैं 4. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप नॉर्म्स. ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? एक जो हम कहेंगे एक स्टैंडर्ड बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ट्रेडिशंस एंड एक्सपेक्टेशंस शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स. वो रहता है टाइप्स ऑफ ग्रुप नॉर्म्स. अगर हम देखें, बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं, परफॉर्मेंस नॉर्म्स होते हैं, एंड नॉर्म कन्फर्मिटी मतलब आप उसे एनफोर्स कर पा रहे हो, उसको उन नॉर्म्स के साथ आप कंफर्म कर रहे हो. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या होता है बिहेवियरल नॉर्म्स, आप एक बार पढ़ लो. देन परफॉर्मेंस नॉर्म एंड देन ग्रुप कोहिसिवनेस, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. बेसिकली कोहिसिवनेस इज़ द अट्रैक्टिवनेस, मतलब
जो मेंबर्स के बीच होती है टुवर्ड्स द ग्रुप, कि मेंबर्स अपने आप को ग्रुप से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो कोहेसिवनेस हो गई। एंड ये जो ग्रुप नॉर्म्स है, ये एक बार पढ़ लेना कि बिहेवियर नॉर्म्स क्या होते हैं एंड परफॉर्मेंस नॉर्म्स क्या होते हैं। तो ये इसमें पढ़ने वाली चीज़ें हैं, एंड बाकी इन्हें डिटेल में आप देख लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। एंड ये टॉपिक्स ओवर है। सो या थैंक यू।